अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वक्त मैं हूँ प्यारी मोना के सेट पे। टीज़र इसका रिलीज़ हुआ कुछ ही दिन पहले। बड़ी ज़बरदस्त फीडबैक है। बड़ा ही एक यूनिक सब्जेक्ट है फॉर पाकिस्तानी टेलीविज़न, जहाँ हम कहते हैं कि जी नई कहानियाँ नहीं लिखी जाती, वहाँ प्यारी मोना की कहानी जो है वो एक प्लस साइज़ औरत की है और उसकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आती हैं बिकॉज ऑफ हर साइज़, और उसकी अप्स एंड डाउन्स, खुशियाँ कुछ कम सारी। तो बड़ा एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसको टैकल किया जा रहा है। लिखा है इस ड्रामे को हसीब अहमद साहब ने, डायरेक्टर हैं अली हसन। इट्स अ मोमिना दुरैद प्रोडक्शन फॉर हम टीवी, बीइंग शॉट हियर इन कराची। और इस वक्त सेट पे हमारी मुलाकात होगी विद ऑफ कोर्स द टिचुलर कैरेक्टर मोना प्लेड बाय सनम जंग एंड अदील हुसैन, जिनका कैरेक्टर है बाबर का। और उनका एक डायलॉग भी है टीज़र में जो आपने सुना होगा कि मोटा आदमी भी मोटी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। इसमें कितनी हकीकत है, इन दोनों का एक्चुअली क्या ख्याल है इस सब के बारे में? कहानी में क्या मोटे लोगों को कैरिकेचराइज किया जाएगा? इज़ इट अ लॉट ऑफ ह्यूमर दैट इज़ सेंसिटिव, और इज़ इट समथिंग दैट पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर? द टीज़र हैज़ गॉटन सम ग्रेट रिस्पॉन्स एंड आई एम होपिंग कि ये ड्रामा भी उतना ही पॉपुलर होगा। सो स्टे ट्यून्ड व्हाइल वी गो कैच दोज टू। जी, तो हम हैं इस वक्त प्यारी मोना के सेट पे और मेरे साथ हैं अदील हुसैन। अदील, अस्सलाम वालेकुम। कनाडा का कैसा रहा आपका दौरा? कौन सा दौरा? कनाडा का दौरा। कनाडा, टोरंटो का दौरा। टोरंटो का दौरा वाज नाइस। आई एंजॉयड माय सेल्फ अ लॉट। मैं पहली दफा ही गया था और वहाँ पे इट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड शो दैट आई वेंट टू, एंड पाकिस्तानी कम्युनिटी से जो प्यार व्यार मिला वो इट वाज क्वाइट अस्टाउंडिंग। आई हैड नॉट डन अ रेड कार्पेट इन अनदर कंट्री बिफोर. Right. And so I did that walkthrough and it was very humbling. And I was really shocked and surprised in a positive way at how much the fans at this stage they appreciate what you're trying to do. Some of them said things that I would have never guessed. Like, Really? Yeah. Really? कि आप क्या लिख रहे हैं? What's going to be next? Why Because are they you being so listen. choosy? They've They listen. apparently been listening. Apparently they've been listening, and this was like a big shock to me. Your first nomination, although Jamshed was my favorite character, लेकिन Right. जैक्सन हाइट्स पे कोई आपको खास घास नहीं लोगों ने डाली नहीं, थी? बहुत घास डाली। डाली? न्यूयॉर्क में टैक्सी के पैसे नहीं देने पड़ते जैक्सन ओह, हाइट्स के अभी लिए। तक? हाँ, जैक्सन हाइट्स always gets the best recognition, and it continues to give me a lot of confidence because Right. when it aired on Urdu One, इतनी audience नहीं थी। Right. तो जैक्सन हाइट्स is my like anchor project for when people say oh ये रेटिंग वाला वो वाला, तो मैं उनको हमेशा मिसाल देता रहता हूँ कि देखो ठीक है। अच्छा काम अप्रिशिएट हो ही जाता है। हाँ, but we loved you in आखिर कब तक? Thank you. And hopefully we will also admire your work in प्यारी मोना। Yeah. तो कहता है कैरेक्टर कि मोटा आदमी जो है वो किसी मोटी लड़की से तो फिर भी शादी नहीं कभी नहीं करना चाहेगा। हाँ, कैरेक्टर तो एक कहता है, मोटे राइटर बंदे ने के लिख सामने दिया। आप बैठे हैं क्या? राइटर ने लिख दिया। अच्छा। हमने बोल दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, I mean, you know, Pyari Mona is an exciting project. One of the first reasons for it being that Ali is at the helm. Yes, the director. Ali डायरेक्टर। Hassan. तो जब अली से मेरी पहली मीटिंग हुई थी तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और मैं तो यही अब आजकल ढूंढता हूँ कि या तो स्क्रिप्ट मुकम्मल हो या आपको पता हो कि कोई फ्लैगशिप आइडिया है कि आपको स्क्रिप्ट तो मुकम्मल नहीं होगा यकीनी तौर पे। अमूमन नहीं होता जी, ये भी नहीं होगा। बट ये ज़रूर था कि अली न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड टू डू विद द ठीक स्टोरी, है। which was a big thing. तो अली और मेरी जो conversations हुई तो मुझे पता चला कि अली knows his content, अली knows where he wants to take it. So मुझे वो एक key ingredient मिल गया कि मेरा डायरेक्टर जो है वो जान मारेगा इस प्रोजेक्ट ठीक पे। है। So that makes me very comfortable. Right. So बस फिर then we've just been flying by the seat of our pants, you know. It's a demanding project for Sanam also exceptionally, so it was very exciting. जब मैंने पहले दिन सनम जंग को सेट पे देखा, I hadn't even met her. And you worked with her before. Worked with her right? 9 years ago. 9 years ago, exactly. हाँ. So immediately I had a scene with her, and I was shocked. And I told Sanam, मैंने कहा, this works. So this project has had this weird quality कि जितने हमने सीन सेट पे किए हैं हमें कुछ लगा है कि हाँ कुछ है इसमें, कुछ है इसमें। तो फिर पता चल गया था कि it's not dealing with this idea of if you want to call it fat shaming or any other forms of discrimination that are faced by women and men in society. It's not dealing with it in a very linear way. At least that's my hope. तो मैंने अपने कैरेक्टर में भी इसी चीज़ को ढूंढा और उसमें भी opportunities हैं where there is a change in behavior and there are realizations about how sometimes you don't mean to when you do something and how sometimes you mean it and then it's painful. So those shades are there. बट देखते हैं ऑडियंस किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। बाबर
या आप ही किरदार का नाम है। बिल्कुल। आपको क्या ख्याल है कि ड्रामा जो है ऑब्वियसली स्कूल तो नहीं करना चाहिए किसी भी एंटरटेनमेंट के प्रोजेक्ट को, इट्स नॉट देयर फॉर स्कूलिंग राइट, और इज इट? I mean, this is the big discussion now when people talk about what is the drama about. हाँ। तो पहले हम कहते थे वो सोशल क्या कहते हैं, सोशल अवेयरनेस, चेंज, सोशल हाँ, अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस। लेकिन अब जो ट्रेंड रहा है वो यही रहा है कि लोग एक खुलासा ढूंढते हैं हर कहानी का कि भाई क्या हो रहा है इसमें, हम क्यों देखें? हाँ हम क्यों देखें। हाँ। तो उसमें फिर एंटरटेनमेंट रीजंस भी हैं। टीवी डज इन्फ्लुएंस पीपल टू व्हाट एक्सटेंट आई डोंट नो। मेरे ख्याल है सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में। हाँ, लेकिन टीवी एज अ फिल्म मेकर्स मीडियम। कहते हैं ना बड़ी बड़ी फिल्में बना के भूल जाते हैं, दुनिया अभी भी ऐसी है, राइट? हाँ, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग होप दैट यू कांट पिन इट, बट एज लॉन्ग एज इट फील्स मीनिंगफुल, कि आपको लगे कि इसमें एक मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं और एक अच्छी मोज़ेक, एक फैब्रिक बना रहे हैं जहाँ सोसाइटी रिफ्लेक्ट कर पाए कि हाँ इस सबसे सिचुएशन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि ये एग्जैक्टली यही एक ऐसा मोज़ेक बने कि लोग उस पर बात करें। बिल्कुल। हमारे टीजर को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। हाँ, टीजर हैज बीन फैंटास्टिक, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई थिंक जब से टीजर चला है तो हमारे सेट पे जरा एक वाइब्रेंट एनर्जी ऑन, हाँ। बिकॉज जितना भी लोग कहें इट्स ऑलवेज गुड टू गेट दैट अप्रिसिएशन। तो टीजर जैसे ही चला है तो वी ऑल रिसीव्ड वेरी नाइस फीडबैक फॉर इट। सनम डिड, द डायरेक्टर डिड, एंड सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। या आवाज़ चली है मेरी उस आइकॉनिक लाइन से। आवाज़ जी बिल्कुल, वो बड़ी दूर दूर तक पहुंची है। आइकॉनिक लाइन काफी दूर दूर तक पहुंची है। लोग पूछ रहे थे मेरी फेवरेट लाइन क्या है ड्रामे की, मैंने कहा अभी तो यही ड्रामा है, चला भी नहीं। यही है, यही है। दोबारा प्लीज एक रिपीट कर दे दोबारा। अब आपको शर्म आ रही है लाइन? नहीं, मुझे शर्म नहीं आ रही। आई जस्ट वांट टू मेंटेन द मिस्ट्री ऑफ व्हाट बाबर इज, एंड ऑनेस्टली मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि हाउ इट्स गोइंग टू टर्न आउट, यू नो, बिकॉज इस कहानी में कोई भी इट्स नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट स्टोरी। एंड आर यू श्योर कि कैरिकेचराइज नहीं किया जाएगा? आई मीन लेट्स होप सो। अब हमारी इंडस्ट्री में अब कंसिस्टेंसी कहाँ तक रहती है, यू नो, प्रोजेक्ट्स इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में शूट होते हैं, इतनी बजटरी लिमिटेशंस होती हैं, डेट्स होती हैं। तो मैं सिनिकल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत अवेयर हूँ कि पाकिस्तानी टेलीविजन में पाकिस्तानी ये जानबूझ के मैं खांसी हूँ। खांसे आप मुझे इतने अरसे से जानती हैं तो मैं तो बोलूँगा। तो नहीं, मैं सिनिकल नहीं हूँ पर मुझे खांसी आई है। नहीं, मैं अभी भी नहीं हूँ, वरना मैं कर ही नहीं पाता ये काम। बट आई एम अवेयर, आई मीन मैंने अपने कुछ निकनेम्स बनाए हैं कि आई एम लाइक आई गेट बॉदर्ड बाय प्रोसेस, यू नो। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या व्हाट मीन्स अ लॉट टू यू। सो आई रियली जेन्युइनली थिंक कि we are naturally good at this, you know, we are good at entertainment. It's like जो कहते हैं ना गली गली में क्रिकेटर निकल आता है, तो हमारे आर्टिस्ट भी कुछ इसी तरह हैं। So मैं उसी चीज़ को देखता हूँ कि bunch of people have come together, so you hope that the resources will carry through the project. So कुछ projects बहुत smooth होते हैं, आखिर कब तक भी smooth project नहीं था, लेकिन उसमें एक director ने अपनी जान मारी थी। तो I mean if I have to choose, then a passionate director will take you through it, and इसमें भी यही है कि मतलब of course we've plenty of support from the production, लेकिन there's always room for things to be better. So yeah, it's been exciting. I don't know what else to tell you. हमने काफ़ी देर से बात नहीं की, we haven't spoken. आपने आखिरी इंटरव्यू दिया something hot को with Hassan, but आखिर कब तक in this? I feel that there is a new energy within you. Yeah. And वो कहीं लेके जा रही है आगे आपको है? No, मैं हमेशा यही ढूंढता हूँ कि मतलब am I excited about the project? I get a bit of criticism for working less. क्या नाम था इंस्पेक्टर साहब का? Inspector Nasir. हाँ, Nasir was an exciting character. Nasir was exciting, and Nasir was away from the main problems of the story. So that was a breath of fresh air for me. तो जब भी मैं सेट पे होता था तो मुझे पता था कि he's not bothered by what the rest of the people are bothered about. In this case, Babar is very much in the thick of things. Right. So there is a lot of heaviness in places. लेकिन ओवरऑल एक्साइटमेंट इस बात की है कि आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट। सो अभी तो मैं इसी से खुश हूँ कि अच्छा हुआ ये किया, इट्स टर्निंग आउट वेल। सो मैं यही चाह रहा हूँ कि स्मूथली और यू नो पॉजिटिवली खत्म हो जाए, फिर बाकी तो एडिटिंग टेबल पे एंड यू नो देन इट्स इन द हैंड्स ऑफ द व्यूअर। कमिंग बैक टू योर आइकॉनिक डायलॉग, ये डायलॉग ये वो डायलॉग है जो कि सुन के इंसान का दिल चाहता है कि अब ये जो मोना है इसकी ज़िंदगी में कोई रोमांस भी बाबर के साथ ही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, आई मीन यू नो वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं बताना भी चाहता हूँ। आई थिंक जब तक 6-8 किस्तें हो जाएंगी तो फिर हम एक लंबा इंटरव्यू करेंगे, ठीक है, तो हम सारे कैरेक्टर्स के बारे में खुल के बात कर पाएंगे। लेकिन देयर इज अ बिट ऑफ ह्यूमर देयर इन द बिगिनिंग, एंड देयर इज अ बिट ऑफ यू नो व्हेन दिस पर्टिकुलर लाइन वाज सेड, लाइक
बाबर वैसे भी मोना को पसंद नहीं करता. अच्छा. I mean, हाँ. in a way, हाँ. you know, not to give too much away हाँ. in the beginning. So I think it maybe doesn't even have anything to do with her weight. It maybe has something to do with her personality. But this is what the audience is going to gauge, you know, कि क्या हम कभी-कभी लोगों को कोई बुरी बात बोलते हैं इसलिए उस पर्टिकुलर वजह की वजह से जो लोग सोचते हैं, या क्या हमें कोई पर्सनालिटी ट्रेट अच्छी नहीं लगती और फिर हम उनकी इनसिक्योरिटी पे बात करते हैं. तो ये वाले वो शेड्स हैं जो आई थिंक इस कहानी के थ्रू बड़े ऑब्वियस होंगे, बिकॉज देन the relationships pan out that way, right, that you realize that अगर इतना black and white होता तो बात यहाँ ना आती. right, so इस तरह की situations हैं. Interesting. Obviously हम ज़्यादा we can't ask you to disclose too much about the story. They'll take me away if I do. No, they won't take you away, but certainly promising लग रहा है, कोई different story लग रही है. जी. मेरा अपना ये ख्याल है कि लोग जो हैं वो पाकिस्तानी ड्रामा में हर उसमें रोमांस ज़रूर ढूंढते हैं. बिल्कुल. तो मुझे उम्मीद है कि मोना की ज़िंदगी में भी कोई एक रोमांटिक एलिमेंट होगा. I hope so. I hope so. क्योंकि वो ज़रूरी है. नहीं, Mona is the star of the show. I mean, she's having a good time. So I'm very happy about it. Promo जैसा रहा है and वही अली का विजन बड़ा स्ट्रॉन्ग था. एंड इसलिए मुझे आखिर कब तक की भी बात पसंद थी और मुझे इस ड्रामे की भी ये बात पसंद है कि अगर कोई सोशल इशू एग्जिस्ट करता है स्टोरी में या उसके फाउंडेशन का भी हिस्सा है तो उस पर इतना रिलाई ना किया जाए कि आप नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग और एंटरटेनमेंट बाकी चीज़ों को क्या कहते हैं स्टिच टुगेदर उस तरह ना करें कि एक ज़बरदस्त कैनवस बने. तो ये भी बहुत ज़रूरी है यू नो कि आप सिर्फ एक कोई इंटरेस्टिंग सोशल पहलू को लेके आप यू कांट रेस्ट. You still have to tell an engaging story. Right. And that's why I'm very happy because I can see that my director knows that he wants to tell this story. Right. So that's a blessing. हाँ, that passion is important. That passion is imperative. Important, बिल्कुल. वो आपसे भी आ रहा है और मुझे बिल्कुल. है ना? हाँ. है ज़रा सेट पे. है. ये लॉन भी अच्छा है वैसे. ये मौसम भी अच्छा है. है ना? हाँ. ये लोकेशन जिस फैमिली की है वो बड़े सेट हैं. सेट भी अच्छा है, लॉन भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं? शुक्र है. बिल्कुल सही है. So उम्मीद है कि ड्रामा भी ऐसा ही होगा. Thank you. खुश क्या कहते हैं? खुशबाश. But I mean, I hope the justice is done to the story and people's expectations. अभी it's in the initial stages. जी. लेकिन obviously I think promo को 4-5 दिन हुए जो भी हुआ है. I don't remember. 3 to 4 days I think. Absolutely. So can't ask for more. There's a lot of clutter in the market. जी. So I'm very lucky कि एक register हुई है चीज़. So I'm very happy about it. So parting थोड़ा सा reveal के एक दो और चीज़ें बता दें कि why people should watch it, other than what you've already said. I mean it's exciting, you know. हमने अदील ये क्या लफ्ज़ इस्तेमाल? हाँ, I know. ये सिर्फ फिलर लफ्ज़ था. ये फिलर लफ्ज़. मैं सिर्फ वक्त बाय कर रहा था. अच्छा. I'm coming to it. Okay. But I mean, watching Sanam don a fat suit is entertaining. हाँ. She's just it's demanding. हाँ. अभी ज़रा मौसम बेहतर हो गया. शुक्र है बेचारी को देख के. हाँ. तो I was looking at her and I was like, wow, बड़ी हिम्मत है. And I really liked how her character is dealt with, like visually. It's really amazing, and she has the right kind of energy for it also. She does. She does. And Ali ने, I mean, एक बहुत अच्छी वजह प्यारी मोना देखने की ये होगी कि अली ने कैरेक्टर्स समझे हुए हैं और लिटरली 2 से 3 सीन्स उनके एक्टर्स के शूट हुए तो हमें पता चल गया था हाँ दिस इज हू दिस पर्सन इज. और उसके बाद से हम वो सिचुएशंस ढूंढ रहे हैं और मैच कर रहे हैं कि हाँ इस सिचुएशन में तो ये बंदा ये करेगा. सो दैट वे इट्स बिन क्वाइट फास्ट एंड हाँ मुझे अच्छा लगी वो चीज़ कि अगर डायरेक्टर अपने कैरेक्टर समझ जाए तो फिर अली की फीडबैक भी बहुत अच्छी है. सो एक तो ये है कि द कैरेक्टर्स आर फ्लैश्ड आउट. आई थिंक दे आर डिफाइंड इन अ गुड वे एंड दे आर नॉट ब्लैक एंड वाइट. सेकेंडली इट्स गोइंग टू बी एंटरटेनिंग. देन वी नॉट हैड हमारे पास कोई ऐसा ड्रामा नहीं है इसमें हीरोइन ने एक इस किस्म की ब्रेवरी ली है you know to not mainstream at least. Not mainstream. So that's a new thing. That's completely novel. So I think पहली दफा कोई plus size lead पाकिस्तान में पहली दफा. तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है बिकॉज अमूमन होता है कि जब कोई आइडिया चल जाता है तो फिर एवरीबडी सेज अरे हाँ ये तो करना चाहिए था. सो इन दिस केस आई एम एक्साइटेड कि वी आर द फर्स्ट. you know, absolutely. So but at the same time in the end what matters is कि audience से connect हो content. So वो तो उन्हीं के हाथ में. बिल्कुल. मुझे ख्याल है टीजर तो कनेक्ट हुआ है तो उम्मीद है कि ड्रामा भी कनेक्ट हो जाए. Yeah. I mean you can't reveal the plot or anything unless we get into the psyche of the Pakistani man. हर इंसान डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है. कोई अपनी वजन की वजह से, कोई अपने बालों की वजह से, कोई अपनी शक्ल की वजह से. आपने किए कभी? बिल्कुल. किस चीज़ पे किए? करियर चॉइस.
मैंने आप भूल किया गई यार। इंटेलेक्चुअल, शायद इतना पहले चले गए जी हम। इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन मैंने नहीं, आई फेस मीन किया है। बहुत इंटेलेक्चुअल बिल्कुल भी नहीं। अब मुझसे भी लोगों ने पूछा तो मुझे याद आया कि इट्स पेनफुल, यू नो, जब आप पढ़ाई लिखाई बैचलर्स मास्टर्स करके एकदम से आप शो बिजनेस में आते हैं, तो उस वक्त तो आपको लेट 20s में पता नहीं चलता, जब लोग अपने पैसे कमा के शादियां हाँ। करके प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि दिस इज़ माई लाइफ, भाई मैंने पढ़ाई लिखाई कर दी। और मैंने उस वक्त स्ट्रगल करना शुरू किया था एट 27 कि मैं 3-4 साल लगाऊंगा, होप शो बिजनेस में कुछ हो जाए। तो अब जब मैं उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि वाकई में देयर वाज वेरी लिटिल सपोर्ट। हाँ And but I remember the people who supported me. I'm not a victim in this regard. Right. But I do remember कि now I realize कि अरे यार वो कितना मुझे लोग याद रहते हैं कि अरे तुम कर लोगे, don't you know, keep working hard, something will happen. And now when I look back I realize कि as soon as you do something which is away from social norm, हर सोसाइटी का एक अलग थ्रेशोल्ड होता है, you know? बिल्कुल। हम अपने बेटों को पढ़ने भेज देते हैं, एकदम से हमारी बेटी जाती है पढ़ने के, मैं जा रही हूँ 4 साल पढ़ने बाहर, तो एकदम से the parents have a different level of anxiety. हाँ। सो ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। मर्दों के लिए क्या एंजाइटी, एज एन एक्टर, एज अ यंग एक्टर आपने क्या फेस किया? मुझे अब है कि ऑब्वियसली एक फिटनेस अवेयरनेस तो बढ़ गई है, आप भी अपनी जिम फीस मुझे भी लगाते लोग रहते कहते थे हैं। तुम्हारी कोई हीरो वाली शक्ल नहीं है और ये वो, ये तो हुआ है, ये हुआ है। हाँ ये बिल्कुल हुआ है। बहुत से जो हमारे एक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपने हेयर ट्रांसप्लांट्स कराते हैं कि थिनिंग हेयर लाइन ये I mean I'm okay with people making their decisions in life, but I think that how other people deal with those decisions is where discrimination comes from, right? So discrimination is not a one person thing, it's at least a two person thing. Somebody has to come and say something to you from the outside, whether it's online, whether it's in person, and then it affects you. Right. So it's a question of empathy. एंड समटाइम्स इंसानों की एम्पैथी अलग अलग टाइम पे आती है ना। आप कभी कोई दोस्तियाँ होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, फिर वो लोग आपसे रिकनेक्ट करते हैं कि अरे यार मैं तुझसे परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए, यू नो, बट माशाल्लाह यू हैव डन वेल, सो ग्रेट। हाँ। But then you imagine कि this is such a good thing, why couldn't this person take an extra step and actually meet me when I felt I really needed their support. So these kind of things are happening to everybody, you know, women, men, children, parents. So, you know, I think similarly आदमियों का भी है, मतलब there are pressures involved. I think earning is a big pressure, you know. Absolutely. If you don't provide as a man or if you're not doing exceptionally well, then society really looks down on you. अगर आप कहते हैं कि नहीं I love what I do, पैसे आ जाएंगे बाद में, तो लोग कहते हैं ये कौन सा mindset है, बीवी नहीं आएगी, हाँ ये कौन सा mindset है। So इस तरह की चीज़ें सबके लिए एग्जिस्ट करती हैं। Right. I think stories play a part in it, but they can also be entertaining. And I hope they they're must both. be entertaining. है ना? They must be. They have to be. They don't have to be funny, but they have to be engaging. Yes. They have absolutely. to be engaging. They have to draw you in. Yeah. तभी conversation होगी ना। है ना? अगर caricature बन जाएगा फिर तो नहीं होगी ना। या तो इतना बोर करते हैं कि लोग पूछने पे मजबूर बोर करते हैं, दिमाग ही दही निकाल Like me at a party. Is that you at a party? Sometimes. I have never met you at a party, so I can't comment on that. Okay. But, some amnesia here. No, we've never met at a party, have we? Okay, I guess not. Once at, I think, Vijat Rao's house. No, we just met like a week ago. That's okay. At a birthday party. It's oh fine. yes, at Rasik's birthday. Nice. Yes. I mean, She's been working very hard. yes, as you can see. the birthday party. The birthday Rasik party. की birthday party, of course, Yeah, of course. So, मजा आया था उस दिन. It was fun. How do you feel? Did people give you a hard time? Why would people give me I'm that? just joking. I realized when I was sitting there that this discussion has nothing to do with Pyari Mona, but I realized that I had like dissected each and every person's work. हाँ. And मैंने तो एक कोना लेके मैं फिर उसमें बैठ गई, फिर उसके बाद मैं घर चली गई. सही मैंने बात. कहा ये तो मतलब है कि. But you're doing good. But we say nice things about people. I think I like to feel that we're constructive. हम ऐसे तो नहीं किसी को discrimination तो नहीं कर रहे हैं किसी की. नहीं. I think it's very subjective. यही तो interesting चीज़ है कि मतलब I think celebrity culture वैसे भी it's gone through a lot of transitions. Yes. और मैं बड़ा समझता था कि जब आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो शायद ज़िंदगी आसान होगी. कभी होती है, कभी नहीं होती. But it's happening globally. So I think people need to decide how to treat the sportsmen, how to treat artists, how to treat public people. I think we've gone really far ahead in, you know, taking people in the public realm in a lot of scrutiny. Then we have to also understand what's the balance, you know, what is the balance. आएगा वक्त के साथ आएगा. है ना? उम्मीद है. देखते हैं और देखते हैं प्यारी मोना. Thank you, Adeel. Thank you so much. मेरे साथ हैं जी स्टार ऑफ द शो सनम जंग, who's playing Mona in प्यारी मोना.
और ये बड़ा ही ब्रेव एक मूव है सनम आपका. एक तो वेलकम टू समथिंग हॉट, फर्स्ट टाइम ऑन आवर शो, एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू. पहली बात तो ये है. इट्स लवली बीइंग हियर, थैंक यू सो मच. टीजर हमने देखा, हमने कहा यार वाओ, इतना कोई फर्क, एक अलहदा किस्म का प्ले, ये कैसे. एंड देन द कैरेक्टर दैट यू आर प्लेइंग, it's a brave move. I can't think of many actors who would have looked so good in एक तो ये and played it so effortlessly or played it at all. तो ये काफी brave move था आपकी तरफ से. I know. It took me like a year to say yes to Really? it. Yeah, of course. Because, you know, just like any other actor, I had like a million thoughts going on कि क्या हाँ करूँ, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था. मैंने पढ़ा, I was briefed, मैंने थोड़ा सा पढ़ा, and then again it came back to me कि, you know, like Mahesh called me and I met Ali, and Ali's like, listen, it's a social message, why can't you understand the depth, do you understand what we're doing? I said, give me the script again. So I went home and मैंने आराम से इस दफ़ा script पढ़ी और मुझे मोना ना पसंद आने लगी. मैं कही बहुत cute है, and you know ये तो it's me, I am Mona and you are Mona, and there's so many other people. हर लड़की में एक मोना होती है. So मुझे अच्छा लगा. वो बहुत टिपिकल नहीं था, और कुछ चेंजेस मैंने उनसे मांगे थे कि ये नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं. और दे अग्री टू इट, दे लाइक या हमें भी लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड आजकल, यू नो, आई एम एज एन एक्टर, आई हैव बीन लकी इनफ टू गेट दिस character, this script, absolutely. this project, because बिल्कुल. these projects are not made that often. बिल्कुल. वो typical कहानियाँ होती हैं, and obviously हमारे पास limited choices हैं, हम actor हैं, हमें काम भी करना है, तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. So yeah, I feel very lucky and blessed to be a part of this project. आपने कहा कि आपको मोना का कैरेक्टर एकदम अपील किया और वो बड़ा क्यूट सा. क्या था कैरेक्टर में जो अपील किया? बिकॉज जब मैं देखती हूँ एज अ प्लस साइज पर्सन, मुझे ऐसा हमेशा ये खौफ होता है कि यार प्लस साइज को कैरिकेचर तो नहीं बना देंगे. तो आपको क्या अपील किया मोना के कैरेक्टर में? सी, मोना बहुत स्ट्रांग है, मोना बहुत करेजियस है. मोना वो लड़की नहीं है कि जिसको आप कहेंगे ओए मोटी, और वो कहेगी कि उसने मुझे मोटी, वो रोएगी नहीं, वो जवाब देगी, वो कहेगी कौन क्या, मतलब मोना इज सो. सी, मोना से वो प्लस साइज वाली चीज माइनस कर दे, मोना एक आम लड़की है. बिल्कुल सही है, जो हर लड़की की तरह. बट इट्स सो सैड कि वो अपीयरेंस पे लोग जाते हैं, और हाँ बेचारी हूँ ये है, और यू नो शी इज टुवर्ड्स द हैवी साइड. सो वो इंसान, हाँ चबी है, क्यूट, और पतली हो जाएगी तो अच्छी. क्यों पतली हो जाएगी तो अच्छी लगेगी? इफ़ मैं खुश हूँ कि जैसे मैं लग रही हूँ, और मोना ओवर अचीवर है, मोना गोल्ड मेडलिस्ट है, मोना अपनी यूनिवर्सिटी में एक्सेल करती है, मोना को बेस्ट जॉब्स मिलती हैं, लेकिन मोना ऐसी है. मोना को देख, सी, मोना इज लाइक एनी अदर गर्ल. उसको रिंग्स पहनना पसंद है, उसका शौक है जी शॉक, जॉर्डन्स, उसको अपने आप को तैयार करना पसंद है, इसकी एक्सेसरीज, शी लाइक्स, यू नो, शी लाइक्स दीज हेयर स्टाइल्स, एंड शी हैज दिस फंकी लाइक एनी अदर गर्ल. सो क्यों मोना को हम आम लड़कियों से अलग करते हैं? और ऐसी बहुत सारी मोना हैं. मगर करते हैं, क्यों नहीं करते? आप बताएं. Of course करते हैं. हाँ बिल्कुल करते हैं. It's a struggle. I'm sure you've been through it. I've been through it. I was going to ask you, you've been through it yourself. Yeah, it was so bad. I was depressed. I didn't want to come on TV. I wanted to stop working. और ये आपका baby weight वाला This time was, था. हाँ. See, I was never skinny. Okay, I was always plumpy and chubby, and I was acceptable chubby. You know, let's say that. Since they create the standards, I was acceptable. Lekin after Alaya, during Alaya, I gained weight. I gained 20 kilos. I was enjoying my pregnancy, and after Alaya, it took me a long time to lose weight, get back. I couldn't even get back to my normal self. But I was bullied so much on social media that I didn't want to read the comments. मुझे घर से मुझे नहीं दिल चाहता था मैं कहीं जाऊँ. I didn't want to do projects. I said no, let me just work on myself. People would call me, come in, let's talk. ये script है, ये वो. I said no, I'm busy doing nothing, but I'm busy. Just because it was all in my head. All in your head, yeah. And I had to fight it, you know, because मैं तो, what am I doing? Nothing. I just don't want to work. Producers are calling me. They want to work with me, but I think in my head कि मैं अभी तो I can't do it. I'm not in the right size or shape. And for an actor, ऐसा कुछ नहीं होता. हमारी industry है इस तरह की cruel, but who's going to break the stereotype? I mean,
who is going to point that out? बिल्कुल. And I think it was high time कि कोई ना कोई तो करे. हाँ. And with this project, I thought this is the best way to tell everybody to, you know, it's mind their own business. Be more accepting and kind. Yeah. And kind. Kind is the word. हाँ. Yeah. So जब आपके पास ये आया स्क्रिप्ट आया, आपने कहा साल पहले आया, you took some time over it और थोड़ा सा, what was it that really appealed to you? मतलब मोना में ऐसी क्या खास बात है? मोना other than आपने बताया कि she's strong, solid. हाँ. मोना में जो भी खास बात है उसके अलावा प्रोजेक्ट का एक एसेंस है, ओवरऑल इसका मैसेज है. हम सिर्फ यहाँ बॉडी शेमिंग की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल बुलिंग की बात कर रहे हैं. हम हरासमेंट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेंटल स्टेबिलिटी की, इंस्टेबिलिटी की, डिसऑर्डर्स की, एंजाइटी की, कि आपको सामने बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये लड़की हो, ये मोटी है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, बट वो यहाँ से कितनी स्ट्रॉन्ग है वो आप नहीं देख रहे. एंड सिमिलरली इसमें और कैरेक्टर्स भी हैं जो दे लुक परफेक्ट, दे लुक ब्यूटीफुल, लुक्स लाइक इनकी ज़िंदगी तो वाओ क्या घर है, परफेक्ट हस्बैंड है, सब कुछ है, बट मेंटली दे आर नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड. किसी को एंजाइटी है, कोई मतलब ये सारे इश्यूज हाईलाइट हुए हुए, बहुत ही लाइट मोड में इनको एड्रेस किया गया है. सो देयर इज अ मैसेज फॉर एवरीबडी. इट इज नॉट जस्ट फैट शेमिंग और बॉडी, इट्स ऑल काइंड ऑफ बुलिंग. बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है. कभी डर लगा था शूट करते हुए कि यार थोड़ा टोन डेफ ना हो जाए, या डिड यू चेंज एनीथिंग अबाउट द स्टोरी और अबाउट मोना वाज क्रिएटेड? Mona took a lot of time to come into being, in terms of I'm not talking about the script, but while we were doing Mona, what should Mona look like? मतलब how did that come around? Mona चलती कैसी है, Mona क्या है, Mona मतलब मोना का जो एक लिबास है वो किसने किया कि ऐसी कपड़े? मैंने, so Ali called me and he's like, you know what, come to MD, and I got the bodysuit made. So let's try it on. And he was very, see, जब आपके सामने वाला इंसान excited होता है ना, तो आपको और दिल चाहता है, like especially when the director is into it, कि you know let's do this, and I said okay fine. I wore my favorite pair of jeans, and you know I tucked my tan top in. I wore Kasam's button-down shirt. That was the only loosest thing in the house. So मैं वो पहन के निकली और मैं गई, और वहाँ मेकअप आर्टिस्ट हमने 2 चुटियाँ पहनाई, और हम बार चेंजेस किए, हमने बिल्कुल नो मेकअप लुक रखना था, वो किया. I wore my accessories, I wore the bodysuit, and we were like, oh my god, yes. Ali's like, यही मोना है, मुझे यही चाहिए. I was like, यही मोना है, really? तो थोड़ा थोड़ा करके एड ऑन हम करते गए, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में बहुत सारे कैरेक्टर्स. नहीं, he took his good time, he took his sweet time to make Mona the way he wants Mona to be, then Babar the way he wants Babar to be. Adeel Husain, of course. Exactly. फिर सबीका को टाइम दिया, ये बच्ची जो हमारे साथ है उसको टाइम दिया, तो मैं उसकी मेहनत देख के I was like, man. अली कह रहे हैं कि आपसे बेहतर कोई मोना कर ना पाता. Really? Yeah, he's like, absolutely. That's so sweet. हाँ. I don't know, he made me do it and I got the hang of it. हाँ. And I think सनम के अंदर भी मोना है, तो इतना मुझे इतना एफर्ट नहीं करना पड़ा, but obviously with the bodysuit and everything. Bodysuit, हाँ. बस सनम, बहुत लोगों ने टीजर के नीचे कमेंट किया कि प्लस साइज एक्टर क्यों नहीं ली? Why, मतलब है कि, but how do you respond to that? Well, everybody has an opinion. They have the right to comment and say whatever they want, but that's would be a more appropriate question if you would ask the producers that. But for me, it's a plus. Thank you so much कि मेरे नसीब में ये आया, और यही तो see, I got a chance to display my talent, my skill. Yeah. Because I got this, and I was not, I mean, I was chubby, but I had to be a little more extra. जिसके लिए I stopped going to the gym to do this Ali बता रहे थे, you did put on a bit of 5-6 किलो आपने. हाँ, I had to, because for your face. So yeah, because मेरे मुंह पे बहुत जल्दी कम होता है और फिर आता भी है. तो obviously हमने जब इतना बड़ा मोना को बनाया, तो हमने सोचा कि ये ना छोटा लग रहा है, फेस छोटा लग रहा है, तो हमें कोई कॉन्टोरिंग नहीं करनी, हमें कोई नोज कॉन्टोरिंग नहीं करना है, हमें बिल्कुल बेसिक रखना है. हमने कर्ल्स करने हैं ताकि और प्लम्पी आए. हम जिम जाना छोड़ दिया हमने. And 3 पता नहीं कितने महीने हो गए मैं जिम नहीं गई. So I used to order that food, you know, to keep my second weight. teaser देखा मैंने चिप्स खाते हुए. Yeah, my weight in place at a certain point, कि उससे बड़े नहीं, तो वो मैंने खाना छोड़ दिया, पिज़्ज़ास खाए, बहुत मज़ा आया. Like enjoying it. इसके बाद पता चलेगा जब वो मेहनत का वक्त है. वो तो फिर वो करना पड़ेगा. लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे अगर मैं सिंसियर हूँ इस प्रोजेक्ट से, तो मुझे करना पड़ेगा.
एंड साइड बाय साइड में एक अभी साथ में एक और चीज़ भी कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए बड़ी कंसर्न अच्छा। थी कि ये क्या हो रहा है, पर मैंने कहा नहीं, ये मुझे करना होगा, इट्स ओके, इट्स फाइन, पीपल गेन वेट, पीपल लूज वेट, इट्स नॉट अ बिग डील. सो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मोना, she's got to look like Mona. मुश्किल काम है सनम, बहुत ही बॉडी सूट पहनना. अभी तो थोड़ा सा मौसम कराची का बेहतर हुआ है, मगर आप लोगों ने शूट तो गर्मियों में शुरू किया था. Major shoot कर और लिया आपका बॉडी सूट इज फ्रॉम हियर टू डाउन टू all the way all down, the way down to your till ankle. here. बिल्कुल. And जब हमारी sleeves लंबी होती हैं तो we add a piece. Yeah, and मेरे पास पूरा लंबा वाला भी है, so बहुत body suit और है, आई एम zip, श्योर no ऑब्वियसली zip. सारा वो होगा, सिंथेटिक होगा सारा. Yeah. So, and it's actually वो रज़ाई वाला material नहीं होता, so it's there's cotton stuffing inside because obviously we want it to be very Look natural. yeah, and cute. हाँ. And the boaties popping out from here and there. I like the boaties popping out. I love. They always pop out. They You always can't pop out. control Absolutely, it. absolutely. Being Mona or no हाँ, Mona, हाँ. they manage their way somehow. They manage their way in somehow. Yeah. But मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामास जो देखने वाले लोग हैं, वो हर ड्रामे में कोई एक रोमांस का एलिमेंट जरूर ढूंढते हैं. तो क्या मोना की जिंदगी में कुछ आपको देखना पड़ेगा, इसमें सब कुछ है ना? इसमें सब कुछ है. हाँ. मोना भी तो एक नॉर्मल लड़की है. हाँ. कि उसकी जिंदगी में वो ही सब कुछ है जो नॉर्मल लड़की की जिंदगी में होता है. हाँ. सो मोना इज नो डिफरेंट देन एनीबडी एल्स. इट्स जस्ट लाइक लोगों को लगता है कि ये ऐसी है तो फिर इसमें कॉन्फिडेंस कम होगा. बस यही नहीं है कि कॉन्फिडेंस कम नहीं है. So she's fun. You'll have a blast. I'm hope really you looking do. forward to it. अच्छा मुझे डर भी लग रहा है. मैं इतना like the kind of response that we're getting, alhamdulillah, people are liking it, people are relating to it. So अब मैं भी इतनी तारीफें कर रही हूँ. So I don't know. I नहीं, hope you अच्छी guys बात है. like it. I'm loving your confidence because आप में नहीं होगा तो फिर बाकियों में कैसे आएगा. But लग तो वाकई बहुत एक्साइटिंग रहा है, और ये बड़ी बात है कि इतना किसी ने कदम उठाया कि कि डिफरेंट की तरह हट के बनाए. थोड़ा सा ये स्क्रिप्ट मैंने सुना काफ़ी अरसे से रखी हुई थी, काफ़ी अरसे से थी, बट it was just not happening. And then finally this thought, the production house thought कि it's high time that we should talk about this. It's an issue. हमारे पास इतने ड्रामे नहीं बनते जहाँ हम सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ये इस तरह के मैसेजेस देते हैं. So I think that's lovely on their end. And the channel is very excited too. Yeah, but they make content that is new and fresh, They हम टीवी try का ये to कह all they the do time, they do yeah. try every now and then कि कोई एक हट के प्रोजेक्ट बनाए. हाँ, they do. They do. Udari and Absolutely, a lot of stuff. परिजाद उडारी, Yeah, ये yeah, वो Parizad प्रोजेक्ट हैं जो is सोच नहीं कर सकता था कि हाँ. ये मकबूल होंगे या लोग देखेंगे. So I'm hoping कि प्यारी मोना भी उनमें से एक प्रोजेक्ट हो. Yeah, For sure, inshallah. for sure. Yeah. पहला टीजर आया, उसमें कुछ एक झलक मेरी भी है, लोगों ने पूछा तो ऑब्वियसली वो मेरा टीवी डेब्यू बिल्कुल नहीं है, बट वो प्रोग्राम है जो मेरे हाल इस्तेमाल हुआ है. So what happened is कि एक टाइम आता है जब वो ना मोना की जिंदगी ये में. मोना है ना, ये हाँ. मोना. So एक टाइम आता है जब वो उसको वो देखती है, लैपटॉप खोलती है कि यार मैं मतलब क्या कुछ किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए. मैं and she likes you, and she's like okay let's check out what Amna says, So देखती है, बल्कि वो गूगल करती है कि how should fat girls get dressed or Right. something like that. Clothes for fat girls or some stuff like that. And then your video pops up and she plays it and she's like, okay, so बाल आगे रखने होते हैं, बाल सीधे रखने होते हैं. अच्छा डार्क कलर्स पहनूंगी मैं. So listen, the look is inspired by you majorly. आगे जाके I have taken scarves. Okay. Yeah, so they're georgettes and scarves, and I'm trying to look like you. Let me tell you that. So yeah, and I remember there's this picture of you. You're wearing all black. I think kind of bell sleeves, little bell, not too exaggerated, and you have a really nice, beautiful scarf with maybe sequins or something. Do you remember that picture? No. You don't? It's on your Insta. So I told them, get me this scarf. I like it. इसमें कुछ हो, because there is an event which we haven't shot as yet. So जिसमें ये जाती है. And वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं. And she wants to look nice, and this is the first time she wants to stand out. So I said, Amna's looking really nice. I think we should try it. I love it. I love it. I love it when we inspire people to find happiness somewhere. बिल्कुल. असली बात तो ये है कि कोई अपने में कोई कॉन्फिडेंस किसी को मिल जाए. Because see, हम लोग रियलाइज नहीं करते. अगर आप यहाँ वॉक इन किए और मैं आपके बीच में कोई खामी निकाल दूँ, or you walk in and you be like, Sanam, what are you wearing?
What happened to you, man? You What put on so much happened to you? weight. What's wrong with you? Yeah, Yeah, your put on skin some- looks really bad. ये धूप में फिरती रही हो. Exactly. So you're just like, hey, why can't we be kind? Why can't we just greet each other और nicely? हमारा and make- actually माशरे में हम greet ही लोगों को negativity से करते हाँ. हैं. Yeah, you put on a lot of weight. Everything okay? ये हमारा मजाक भी होता है. होता Okay? है. It's a joke. I'm joking. Oh, and I'm thinking the whole day. The whole day, ये I क्या बोल really रही look थी? bad. Yeah, I mean, yeah. No, am I not looking nice? Yeah. Yeah. But anything to spread a little bit of kindness, a little bit of happiness. Exactly. And- Also, the standards, the beauty standards are so high now. Yeah. So we exactly know you. I mean, if you're this, you're beautiful. हाँ. So we want to break that, that stereotyping, and that Absolutely. stereotype and all that. नहीं हर God has made us in different sizes. Yes. We're all made differently. Somebody's tall, dark, fair. We're all different, and we should cherish it. But we're also embrace not it. going to advocate obesity or an We're not unhealthy doing fat. it. Exactly. We're not doing it at all. Exactly. यहाँ कहीं में नहीं लिखा है ना ही स्क्रिप्ट में लिखा है ना ही हम ये दिखा रहे हैं मोना tries it's not like Mona doesn't try but she doesn't tell her mother और उसको शर्म को ये क्या बोलो she's like it's my journey Yeah. let me handle it I am going to lose weight if I want to For myself. I'm Yeah. not going to lose weight because वो मुझसे शादी नहीं करेगा Yeah. ये वो आंटी कहनी है तुम्हारी बेटी कितनी मोटी है मैं तो मैं नहीं करूँगी तो ये देखो मैं खा रही हूँ तो होना ये है so वो कहीं भी unhealthy नहीं बोला है कि it's okay and we've also I mean there's a line where I tell my mother and I'm like listen what's wrong with you fine I'm fat but I'm fit I don't have any health issues I'm stable from here what is your issue क्यों आप मेरे पीछे पड़ गई हैं तो ये चीज़ भी उसने बताई है मोना ने Zabardast. I'm really looking forward to it. Seems like a sensitively written script. Yeah. Or Ali, of course, is a really good director. And he's so Yes. passionate about it. और मेरी उनसे बात हो रही थी तो काफ़ी मुझे यकीन सा है इस project में. मुझे भी काफ़ी यकीन सा है and we've seen the second teaser so we're all so excited now मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से एयर हो जाए ताकि मैं भी बैठ के देखूँ कि क्या हुआ है Absolutely. आपने बड़ा selective काम किया है लेकिन जी मैं काम नहीं करती कम काम करते हैं but इसके बाद hopefully we'll see you again like एक तो पहले of course इसमें but you were saying that you're also shooting for something else. I'm shooting for something else because my husband is here these days so Right. it's been 3 months that he's here so I finally got a chance to work because मुझे बहुत बुरा लगता है I'm not that Alaya I mean because he lives there Right. and I live here Right. Alaya is here with me so if I go out to work Alaya doesn't have daddy or mommy anybody and then No, I'm sorry, I have no clue. Where does he live? I'm sorry he's a pilot Right. he's flying all the Oh, time so he's flying all the he time. lives in America Okay. so we're waiting for our immigration Right. so which is why because a lot of people are like oh ये अपने मियाँ के साथ नहीं रहती what's wrong Because people love to judge, right? yeah they do they so like- that's what we're saying stop judging They love to decide your now life for that you. Kasam is here so so मैंने कहा अब मेरे पास टाइम है मैं कर लेती हूँ जितना कुछ करना है when he'll go back then I'll sit at home yeah. बिल्कुल सही है. But it's good that you got your priorities sorted. Yeah. And life is a balance. It's course about it finding is. the balance. It is. And you found the balance in your yeah career. and I work when I miss working हाँ. and then when I'm tired I just relax बिल्कुल सही है. Sanam, it was lovely talking to you. Same here. And I think we should catch up after Pyari Mona. we will inshallah watch a few episodes Yes. and I think I'll just drop by at your studio. I have your number. I will be in touch. Yeah. And we must connect after that because as a plus size person, I will completely relate to it. Yeah. If it hits the right I like notes. that if it hits the right It note. needs to hit the right notes. It Yeah, does, it does. yeah. Absolutely. Thank you, Amna. Thank you, Sanam. Thank you.